किसको देख रहा था मेरा हाथ ये देखो ये मैं अपने I know you were explaining Hindi, that is fine. Your own language is also fine, provided whatever you do is understandable. Make sure you say what is required in that. Don't read it or why? No, I just want to explain it because I know what it is, but language. That's all. I'm not going. I'm not taking an exam. I'm taking your own course. You have to take our right hand. You have to. We are given the fingers. Main fingers. No, we not. So left hand में रखते हैं. Right hand में reduce the thumbs up. चलो ये हिंट है आपके लिए. Girls. Let her traverse the thumb shows the direction of the current and the fingers around it show the magnetic direction of the current. Yes, that's it. So she's talking about some three fingers. Can you tell me what is that? Fleming's left hand rule. Okay. In which we use our three fingers, thumb, index, and middle finger. The index finger shows the flow of current. Okay. That's wrong for you. Index finger doesn't show you the flow of current. Middle finger current direction. Middle finger shows direction. You can everyone please once again one by one everybody will tell me again. Maybe concept finger kya? We'll start with you. I think you said it correctly. So talk to you at the end. If somebody goes wrong, you jump in. Yes. What is her name? Can you tell us Fleming's left hand rule? Basically, which finger represents what? The first one, magnetic. Index finger, magnetic. Then this one, middle finger, sector finger, it represents current. Then what about current? Thumb shows. Oh, direction. सारे direction ही बता रहे. ये the direction of current. Direction of. It is direction of motion. So, can you tell me quickly? Yes. Left hand. We only have left hand. Abhi tak humne right hand. Ma'am, this is
motion of object. Object. No. This is motion of conductor बोलते हैं. Motion of conductor. This is magnetic field and this is current. All right. Repeat quickly. Yes. This is motion. This is current. Which one is motion? Thumb is motion. Yes. Current is magnetic. All right. Quickly. Motion of current magnetic field. Motion of current. Sorry. And go again. Motion of conductor magnetic field. That is class one. Motion of conductor magnetic field. See, can you? Although I think you showed your magnetic field. Motion of the conductor magnetic field and direction of the Motion of conductor magnetic field. current. Last current की वजह से वो लेकर होगा ना, तो फील्ड लेकर का मोशन. Motion of conductor magnetic field. Motion of the conductor direction of magnetic field direction of current. ठीक है. Motion of conductor, that this is the current of object and magnetic field. I think you were the one who said that. So what you all use Fleming's left hand rule, you know what it says, and I think in the very first class we saw the thing that if any conductor and current is passing through this conductor and you are placing it in between some magnetic field, then this conductor is going to move, depending upon the direction of current. If this is the direction of current, of course यहाँ से आपने फिर जो भी आपका source of power है वो लगा दिया है, current is flowing, ठीक है? So अगर ये north pole है, ये south pole है, so whenever you are saying Fleming's left hand rule, so like the problem that she faces, most of you will face that I know what it is, but I don't know how to put it in words. That will happen. You know what it is, and you can simply not just end up at this is this, this is this, this is this. You clearly see that all these three fingers are what? Perpendicular to each other, right? So you have to specify this thing also when the law is asked, the rule is asked, sorry, that all these three are perpendicular to each other. They all are perpendicular to each other. Okay? So what happens that this current carrying conductor, okay, we apply Fleming's left hand rule, and with the help of this, like you all said, this center finger will represent the flow of current. And let me just make it easier. Let's just put this north and this south, since this is easier way. So the conductor current is in this direction. This is the direction of magnetic field, and I can clearly see my thumb. Thumb represents the motion of the conductor, and why this conductor moves, because some force acts on it, and that force acts in this direction towards your right. Okay, so this is Fleming's left hand rule. It tells you that any current carrying conductor will create a magnetic field, and due to that magnetic field, a force will be experienced by that conductor, which will either move it this side, that side, depending upon the direction of the current. Now, using this principle today, we will be doing, I believe we did solenoid, right, in last class. ठीक है, so solenoid का अगर आपको solenoid का आपको magnetic field जो create करा बढ़ाना है, तो आप क्या क्या changes करोगे? आपको increase करना magnetic field. What will you change in that solenoid? What changes will you make in that solenoid? Okay, I will reframe my question. And we can increase the number of coils, or we can increase the current passing. Two things, either coiling बढ़ा दो और number of coils बढ़ा दिए तो magnetic field जो generate होगी वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. And अगर आप current बढ़ा दो उसमें current बहुत ज़्यादा pass कर रहे हो तो उसकी वजह से भी जो field होगा resultant वो क्या होगा? ज़्यादा होगा. So two way to increase the magnetic field. coil बढ़ाए तो distribute क्या हो जाएगा? तो फिर कम नहीं होगा. क्या distribute हो जाएगा? voltage.
तो करंट है वो कॉइल का आधा तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट जाएगा। नहीं रेजिस्टेंस आप ऐसा सोच रहे हो कि कॉइल बढ़ रहा है, तो जब आपको बोला जाता है कि कॉइलिंग बढ़ाओ, तो ये जो कॉइलिंग बढ़ाने की बात की है, तो जब कॉइलिंग बढ़ाकर बोले तो दैट मींस यहाँ पे भी करंट आई पास हो रहा है, और यहाँ पे भी जो मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 एम्पियर पास हो रहा है, तो यहाँ पे से भी कितना पास हो रहा है 1 एम्पियर। हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि हम करंट जो है सेम ही पास करेंगे, बट क्या बढ़ा दिया अभी यहाँ पे कॉइलिंग। सो इन दिस केस व्हिच इज गोइंग टू प्रोड्यूस मोर मैग्नेटिक फील्ड, क्लियरली दिस वन, बिकॉज़ नंबर ऑफ कॉइलिंग इज मोर, ठीक है। बट नाउ लेट्स से बोथ ऑफ देम आर सेम नंबर ऑफ कॉइलिंग्स, let's say same wire, same coiling, same diameter, everything same. I don't know कितने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, so both of them are same, and instead of 1 ampere let's say यहाँ पे 0.5 ampere ये हो रहा है, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई जाती हुई, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सोलेनॉइड के रिलेटेड क्वेश्चंस। आपको इतना ऐसे it's very easy also, I don't think so. They'll simply ask you if you want to change the strength of the magnetic field for a solenoid, what changes will you make in that solenoid. So either you will change the current passing through, or you will increase or decrease the number of coils or turns of the circular turns, okay? This is the two things. Now yes, and I think I don't know if you were talking about this. So the field which will be created, ठीक है। सो आप क्लियरली देख रहे हो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि यहाँ से अगर सारे एग्जिट हो रहे और यहाँ से रिटर्न आ रहे, तो विच इज दिस पोल नॉर्थ पोल एंड विच इज दिस पोल साउथ पोल, ठीक है। सो आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ पोल आ रहा है, एंड इनसाइड दिस डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो दिस इज कंटिन्यूअस लूप्स। So this is what happens in normal this thing also. So अगर आपको पूछा जाए कि how is the magnetic field inside the solenoid? Inside the solenoid field कैसी है? It is parallel magnetic field होती है और काफी यूनिफॉर्म होती है, तो inside coil जो होती है हमारी, inside the solenoid हमारी फील्ड कैसी है। अगर आपको पूछा गया, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आपको पूछा गया कि हाउ आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड, सो इनसाइड द सोलेनॉइड दे आर परफेक्टली पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, एंड ये यूनिफॉर्म होती है काफी, एंड इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस थिंग आई थिंक इन लास्ट क्लास आई इवन टोल्ड यू राइट। सो अगर आपको परमानेंट मैग्नेट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, वो पर्टिकुलर मेटल जिस आलमी को है, व्हिचएवर यू वांट टू मेक इट परमानेंट मैग्नेट जो है, आप इसके अंदर वो रॉड डाल दोगे, ठीक है, एंड सिंस वो जो भी मटेरियल आपने डाला है क्या हो जाएगा, सारी की सारी फील्ड लाइन जो है वो पैरेलल पास हो रही है वो ऑब्जेक्ट से, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, दिस मैग्नेटिक मटेरियल, सो दैट इज व्हाई इट इज एबल टू मेक दैट ऑब्जेक्ट मैग्नेट, उसको परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट नहीं कर सकते तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसे और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। So basically that is why they put the core metal का कोई आयरन कोर डाल देंगे या स्टील कोर डाल देंगे, जो भी हम डालते हैं अंदर, वो इसके अंदर क्यों डालते हैं, बिकॉज इस सोलेनॉइड के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है, पैरेलल एंड यूनिफॉर्म। आई होप आई एम ट्राइंग टू एम एबल टू कन्वे व्हाट आई रियली वांट, ठीक है। सो this is the reason I should have drawn some other colors. So ये आपने वो आयरन कोर या आयरन स्टील को कॉइल के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वो कॉइल थी, कॉइल के अंदर तो स्पेस खाली होगी बिकॉज़ कॉइल से बहुत सारी कॉइल थी, यहाँ हमने इंसर्ट कर दिया, फिर वो मैग्नेटाइज होने के बाद निकाल लेंगे तो वो परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, जो भी हमने सो आयरन सॉफ्ट आयरन नहीं होगा, बट स्टील एंड ऑल जो होता है वो हो जाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए हमारे पर्पस के हिसाब से हम उसको ये करते हैं। एंड आपने शायद थोड़ा YouTube पे सर्च कर लोगे कि हाउ इट इज फॉर्म, सो यू विल सी दिस हैवी सोलेनॉइड कॉइल्स होती है, उसमें वो ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है व्हिचएवर शेप इट इज, एंड दैट इज हाउ यू create permanent magnets. Very strong of course, but you can check out those videos also. Let's start. This is not important. So today we are going to do one important thing. So this was
the principle based on which basically Fleming's left hand rule की मदद से we will see the motor का working. We all know what is motor, right? Motor क्या करती है? मोटर क्या करती है? ये पंखा क्यों घूम रहा है? मोटर है अंदर, ठीक है, आपके मिक्सर का अंदर क्यों घूमता है? मोटर यूज कर रहा है. And what is it doing? It is converting electrical energy to mechanical energy. ठीक है? So now it is able to. So motor, today we will see working of motor, how motor works. So what is motor? Of course, which motor? Electric motor. So what is electric motor? It is a device which converts electrical energy into mechanical energy. ठीक है? I am just writing this. You write it in complete form. So what is electrical motor? It is a device which converts electric energy into mechanical energy, and the most important topic of your chapter. So pay attention to what we will be doing. So we have clearly seen कि अगर एक कंडक्टर कैरी कर रहा आसपास में फील्ड लगा दे तो एक मोशन क्रिएट होगा. So we take one coil. एक कॉइल ले लिया हमने. And we will name this. This is a metal का एक कॉइल लिया हमने. हम इसके ends को ABCD लिख देते हैं. ABCD. ठीक है? अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि ये सारे जो मोटर होते हैं वो क्या होते हैं? टर्न होते हैं. सो ये हमारा फोकस क्या होगा कि ये जो कॉइल है ये कैसे हो जाए? रोटेट होते जाए. ठीक है? सो रोटेट होने के लिए हमने क्लियरली देखा है कि अगर किसी भी यहाँ से मान लीजिए हम आगे करंट पास करेंगे तो इसको मूव करना होगा. ठीक है? और मोशन में लाने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो करंट पास होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड होना चाहिए. अब मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे भी नहीं रख सकते. हमने क्लियरली देखा है मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ठीक है? इट शुड बी परपेंडिकुलर 90 डिग्री. एग्जैक्टली. सो अगर ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा ही प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए आपने एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है. सो क्लियरली फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है? ऐसे जा रही है. ठीक है? इस डायरेक्शन में ना फील्ड तो. ठीक है? सो अगर करंट मेरा ऐसे जाएगा तो ये रिक्वायरमेंट तो क्लियर हो गई कि करंट और फील्ड के बीच का डायरेक्शन क्या है? 90 डिग्री. ठीक है? फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है. सो मान लीजिए ये मैंने करंट ऐसे पास करना है, इसमें से ऑफकोर्स ऐसे पास करना है. तो आई नो दैट यहाँ से जो भी मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, since current is going like this will be my positive. This is clear? Any doubts in this? ठीक है? हमें नीचे पर भी रखने पड़ेंगे ना, क्योंकि जब आपकी कॉइल उस साइड भी तो जा रही है. ठीक है. सो ये सही नीचे ऊपर भी तो रखना पड़ेगा. सो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप. ऐसे हमें यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस करना है, इसलिए प्लीज डोंट ड्रॉ साइमल्टेनियसली. वी आर गोइंग टू मेक चेंजेस. सो व्हाट ही इज सेइंग दैट हमें ये कॉइल जो है जैसे ऊपर जाएगा तो फील्ड वहां पे भी रहनी चाहिए. सो अगेन दिस इज 2D पिक्चर. मैग्नेट का शेप इनफैक्ट हम एक में आई हैव अ वेरी हाँ. सो ऐसे होता है. बट इन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, तो आप 2D पिक्चर में तो हम इसे बता नहीं पाएंगे. सो इसलिए आप हम जब वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे, बट आपके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा बहुत आप यूजुअली मोटर में कॉपर यूज होता है, उसके लिए कंडक्टर के लिए जस्ट मेटल यूज करते हैं. मैंने कब बोला कि आप बोला मेटल कॉपर को भी मेटल है. okay, so I have not even specified that we are using some other metal. We are just going into principle of that. I am using word conductor. इसके लिए कोई भी मेटल हो सकता है. हम यूज करते हैं कॉपर ऑफकोर्स घरों में भी. सो कॉपर का रीजन में शायद वही फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी में किया है कि यूज कॉपर का इन ऑल आवर हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर एंड एट द सेम टाइम टेस्टी. It has the least resistance. ठीक है? सबसे least सिल्वर है बट वो चीप नहीं है. So इसे चीप also है, least resistance both of purpose of. So let's jump back over here. So now let's not look into what is happening over here, but let's look over here. So again I have field, I have current.
लेट्स जस्ट टेक AB का केस, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मुझे पता है कि सिंस ये करंट भी पास हो रहा है, फील्ड भी है, तो इस पे कोई फोर्स एक्ट होना है, ठीक है। सब मुझे पता है फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा। आई विल आल्सो सी एंड यू आल्सो चेक। टुवर्ड्स द बोर्ड हो रहा है सबका। सो ये मेरा फील्ड ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे है, तो टुवर्ड्स द बोर्ड। सो ये बेसिकली जो कॉइल है ये इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, ठीक है, बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा। एवरीबॉडी, ठीक है। नाउ लुक एट द CD वाले डायरेक्शन में। सो CD वाले, सो आर्म AB में AB is going to get pushed behind, बोर्ड के पीछे की तरफ जाएगा। CD के साथ क्या होगा? Take the same left hand, please do not switch your hand. So now again field is in this direction, current is in downward direction. So I clearly see that this is the direction of current, this is the direction of field. So अब ये कहाँ पे आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। So AB is experiencing force पीछे की तरफ, CD जो है आगे की तरफ। So clearly ये कैसा हो जाएगा? रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आगे की तरफ जाने वाला है, ये पीछे की तरफ जाने वाला है, ठीक है। So this is what happens, but the problem is जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, so हमारे यहाँ पे वायर तो अगर क्या हो जाएगी, ये अभी यहाँ से यहाँ आ गया है, ठीक है। और अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ चेंजेस ना होकर ये ऐसे होकर अब ये इधर आ गया है, थोड़ा टर्न होकर यही चीज अब ये साइड में आ गया है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बाहर आना था, अब ये कॉइल टर्न होकर यहाँ आ गया, ठीक है। सो एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है हमारे पास कि अगर पीछे तक तो ये चला जाएगा, फिर एक पॉइंट ऐसे आ जाएगा जब यूटर्न हो जाएगा बाय so that to even like the video will actually help to understand, not able to depict that properly with the 2D structure, but now this ABCD and we have to maintain that loop कि वो हमेशा ही रोटेट करता रहे, हमेशा ही रोटेट करता रहे पूरा। To bring that important change, we use some important structure over here which is known as two split rings. Split rings use किए जाते हैं। So what is split rings? एक complete जो split ring होगी broken into two pieces. So we use split rings, ठीक है, and the split ring. So instead of now fixing this loop to the wire, because अगर rotate मान लीजिए आपका rotate भी होता रहता तो rotate आपके wire भी तो rotate होने लग जाते ना। So I don't want my wires also to start rotating along with that. So now I break the contact and I maintain that contact via two brushes which are of carbon material, ठीक है। So ये दो brushes मैं use करती हूँ। Now क्या rotate होने वाला है? ये जो split ring के साथ साथ ये loop rotate होने वाली है, ठीक है। And जैसे ये split ring जो है, ये split ring जो है, they are in contact with the brushes. So आपको brushes के साथ contact बताना है. So they are in contact with the brushes. तो अभी यहाँ पे क्या होगा? जैसे loop rotate होगी, तो वायर नहीं ट्विस्ट होने लग जाएंगे, सिर्फ उसके साथ क्या होगा? ये रिंग जो है रोटेट होने लग जाएगी. So now I will use some other color. So let's say this side is shown by red color and this one is shown by black color, ठीक है. Now आपने बताया कि ये AB है, ये CD, ये पीछे की तरफ जाने वाला है, ठीक है, पीछे की तरफ जाने वाला है. अब ये जब पीछे की तरफ जाने वाला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रिंग भी जो है ये क्या हो जाएगी? ये भी रोटेट होने लग जाएगी, ठीक है. रिंग भी साथ में जुड़ी हुई है तो रिंग भी रोटेट होने लग जाएगी. If you are not able to understand via this diagram, it's not that. So understand it via this thing. So this is the ring. So since now this is rotating, so ये रिंग जो है ये भी साथ में रोटेट हो रही है और यहाँ से वो ब्रशेस हमारे हैं जो कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक करने वाले. सो व्हाट हैपेंस? जैसे ये रोटेट करती है और आधा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, सो ये जो रिंग थी तब तक तो ये रिंग जो है घूम घूम कर क्या हो जाएगा? यहाँ से स्विच हो जाएगी और दूसरी रिंग इसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगी, ठीक है. सो क्या हो जाएगा? अब ये रोटेट हो गई. अब तो रोटेशन में यहाँ बता नहीं पा रही, बट रोटेट होते 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 ये इसका कॉन्टैक्ट जो है इससे कम होते जाएगा,
ठीक है, और इसका कॉन्टैक्ट जो है यहाँ से जो है ब्लैक का कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे रेड का कॉन्टैक्ट खत्म हो गया ये ब्लैक कॉन्टैक्ट में आ जाता है. So after some time because ring is rotating, so contact will look like this. Of course that black is connected पीछे से, ये पीछे से यहाँ पे इससे contact है. So this will switch because ये ring rotate कर रही है. अब ये black part जो है ये carbon brush से connect हो जाता है, और ये जो red part है जो है क्योंकि अब ये rotate हो गया, of course in diagram I'm not able to show it. So ये जो red है ये इससे connect हो गया है, ठीक है. So what happens now? Current will switch. Let me just show you the video. So let's just understand. Let's not do this first. Let's just finish the diagram. That will be better for you also. Now we can depict this with a pen also. Okay. Pen like ये दोनों इधर से ऐसे करंट आ रहा है और ये रोटेट हो रहा है. ये एरिया को टच हो गया. So how will I need to show the other side also. I'm not able to. My fingers are touching precious carbon which are touching this copper plate, and while rotating it switches the sides. Split ring. Okay. I think if you have understood, you'll understand better via the diagram. So let's just finish this. We'll check the video. At least this part is clear. AB experiences which force? Inside the board, and this CD experiences outside the board. So it is going to complete half rotation. ठीक है? And due to that rotation, यहाँ पे ये जो part है ये भी आगे rotate होने लग जाएगा नीचे की तरफ. And this thing is known as, this is very important, split ring, or it's known as commutator. And why is it known as commutator? Because it is going to play an important role in switching the direction of current. We'll see that video which will help you understand more in the 2D format. Of course, this is power supply. And which power supply are we giving, DC or AC? In this represents what? DC power supply or battery. Okay, so this is your power supply. This is magnetic field, and this is what? Carbon brushes. Okay, so this is carbon brushes, and of course ABCD represents what? It represents the coil जो rotate होने वाली, ठीक है? Now आपको ये तो पता चल गया कि ये पीछे की तरफ जाएगी और ये आगे की तरफ जाएगी, और थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाने वाला है, स्विच होने वाला है, ये यहाँ पे आ जाएगा. So this CD will come on this side, and this AB will go on this side. With the help of this split rings, it happens. So अब जिस CD में downward direction जा रहा था, ये split ring कैसे, we'll check in video, you'll understand. So that is why अब ये CD में कैसे हो रहा है, opposite direction में current जा रहा है, and that happens because of what? This split ring which are in contact with the brushes. So what is the split ring doing? Split ring की वजह से ये जो coil है, इसमें जहाँ पे डायरेक्शन जो ऐसे जा रहा था सीडी में पिछली बार, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सीडी में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है. सो कम्यूटेटर का मेन रोल क्या है, स्प्लिट रिंग का मेन पर्पस क्या है? रिवर्सल ऑफ द करंट, रिवर्सल ऑफ द करंट. ठीक है. नाउ बिफोर आई डू एनीथिंग and explain any further, I will be like we can check the video, that will be really helpful, and then we can discuss further. If you have not understood with respect to video and the diagram, then we can correlate and discuss further. It's a very nice video. Where should I? Excuse me, ma'am. Yeah. There was a question in the paper. The first question. Yes, ask. Ma'am, they are given that there are three refractive index, one Yes. A, B, C, and one A is 1.33, B is 1.65, and C is more than 1.65. So, Okay. which? Wait, I am not there with you. I am doing something else. That's a question from the test.
Yes, ma'am. And there's a problem with the question or problem with not understanding the answer? I'm here, no, ma'am, but still they have marked. Okay, what is the question number? I check the paper. First question. First question, I'll check. Which test? Light chapter. Light chapter. Okay, so now Ma'am, if refractive index is less, refractive index will be more or less. Because this means if refractive index is more, speed of light will be what? less. And the तो मैं देखते बेटा I have not checked that paper itself. So I will check. Don't worry. Wait now. Okay, how will I share it with them? I'm first have to stop this. And stop this share. Stop share. And Share share. basic. Video. Ma'am, you have to share the sound also. Where to how to do There's that? an option there when you are sharing. All right. So again, stop share. Share. And Share basic. sound there. Share. And optimize for video. All right, thank you. This is a very nice video, and I think I will. So this is a very nice video. It will, and you can check it in YouTube as well. So there's no harm to go again and check again and again the video. What is happening over there? Relax. How much now? At least focus on one thing. Now this is important. Look around the house, you will see many devices that have electric motors, such as kids' toys, table fans, Should I turn it? toothbrushes, hair dryers, and this electric cutting knife. But how does the electric motor work? You turn it on and somehow it starts rotating. Why is that? In this video, we'll cover the basics of electricity and magnets, and then put it all together to understand how the motor works. This video is sponsored by Brilliant. Let's start with something called a circuit. You have a battery, some wires, and a device that uses electricity such as a light bulb. Let's take one of our bulbs, which is not that we turn. Caution and south pole towards the work to sit here. The two side magnets. Let's bring in another permanent magnet on the side. The magnet turns on the bulb. You can't do that with a permanent magnet. This you know, right? Now watch what happens when we flip the battery. The electric current was flowing this way, but now it flows the other way. This will cause the poles on our magnet to switch places. North will become south, and south will become north. This is called reversing the polarity of an electromagnet. Instead of flipping the battery, an easier way to do this is to just switch the wires. You should be aware that the electromagnet will get very hot if it's on for a while. Just a caution in case this video inspires any science projects. Let's come back to our spinning magnet. This time we'll replace the spinning magnet with our electromagnet. As soon as we connect the wires, the magnet turns on and it lines up with the side magnet. Now, in reality, connecting these wires would prevent the bolt from spinning freely, but what's important here is the concept of the spinning electromagnet. Now let's switch the wires to reverse the poles on the electromagnet. The same poles repel and opposite poles attract. Now reverse the polarity again. Same poles repel and opposite poles attract. If we keep switching the polarity, our electromagnet will just keep spinning. To make this stronger, let's bring in another permanent magnet on the side. Notice how this side has the south pole towards the center, and this side has the north pole towards the center. The side magnets work together to spin the one in the middle. This right here shows the very basics of an electric motor, but we need to make a few improvements. The two side magnets can be replaced with stronger curved magnets. And instead of a bolt with wires, we're going to use a metal loop. This is called the armature. Connect our wires and we have a circuit again. This time you can think of the electromagnet as flat like this with the south pole pointing up. Now the armature will spin until opposite poles are lined up. We can keep it spinning by switching the wires just like we did before. But this is a lot of work to sit here and manually switch these wires. We need to add something to the armature called a commutator. It's a ring with gaps on the opposite sides. The commutator will spin along with the armature. Now we connect the circuit with two brushes on the side. These brushes will slide along as the commutator spins, and they are spring-loaded so that they always maintain contact.
The current flows from the wire through the brush, the commutator ring, the armature loop, and back through the other side. Now we have our electromagnet and the armature spins. You As see, we you come now around this breaks the time, the contact brushes to will join switch other onto to the your other side of the take your commutator color. ring. Remember, there's two brushes, so this is happening on both sides. Before the switch, the current in the armature is flowing this way. After the brushes switch sides, current will flow the other way. This means the electromagnet switches polarity, which will cause the armature to keep spinning. This commutator ring does the same thing as switching the wires like we were doing before, but this time it does it all on its own. It will continue to spin as long as we're connected to a battery. Disconnect the battery, no more electromagnet, and the spinning stops. Now so far we've only used one loop on the armature. This will cause our motor to have an irregular speed, and in fact, we could get stuck in this position with the brushes halfway between commutator segments. What we can do is split the commutator ring and then add another loop. So first, the brushes are in contact with these two commutator segments, which turns on this electromagnet, which causes it to start spinning. Once we get to here, the brushes switch contact. You want to see further because now it will show in reality how there is not a single loop for the motor, right? If you must have opened it, like he was saying, very too many thin wires and too many loops and a lot of commutator rings and many commutator rings and loops like this. Together they create the motor. So do you want to finish this video? We can stop and start discussion. Okay. You know I think the one he does it for free, so you can check the video again for your home. Should I finish it or check it? Yes or no? Yes, yes. Why? Back to the next pair of commutator segments, which means this loop turns off and the next loop turns on. Now this electromagnet wants to spin. The brushes switch contact and the next loop turns on. This keeps happening as our motor spins. It's almost like the loops will take turns being an electromagnet. Some electric motors will add many loops to the armature. This ensures that there will be a continuous spinning motion on the motor. This spinning force on the armature is called a torque. Stronger torque means a faster spin. There are some things we can do to improve the torque of the motor. Electromagnets are stronger when there are more wires. This is true when we wrap more wires around the metal bolt, and it's also true when each of our armature loops are made of many wires. The motor will have stronger electromagnets, which means it will spin faster. If you look at some pictures of real electric motors, you can see lots of wires wrapped around. And yes, this is the same reason. More wires wrapped around means stronger electromagnets. Another way to make this stronger is to use more electricity. Let's learn a few more terms here. The part that doesn't move is called the stator. In this case, it's the two permanent magnets on the side. These fit inside the edges of the motor case. The armature in the middle is also called a rotor. Remember, this is the part that spins. The axle goes through the middle here and then sticks out the back of the motor. What I've shown you in this video is called a DC motor. If you have a device that moves and is powered by a battery, there's a good chance there's a DC motor in it. Other types of electric motors will work a little differently than what I've shown here. No matter the type of motor, most of them will produce some type of spinning motion. Once it's spinning, we can use this to make different devices move. In this case, a kid's toy. Or even a fan that cools your room. The spinning of the motor can be converted to other types of movement, such as the side-to-side motion that we see in this fan. Or how about this electric cutting knife? Each blade is going back and forth. It all starts with the spinning of the motor to turn a gear, which then pushes these two pieces back and forth. So hopefully this video has made a few light bulbs go off in your brain. If you like learning new things, head on over to Brilliant. This is a problem-solving website and app that focuses. Where are we? Which one should I share now? I'm not. Don't check the sound. Alright. So now let's move back to this part. So now I hope you have understood what's the importance of the split ring. As it was moving halfway, this comes in contact with the other brush, because of which
यहाँ पे जो करंट पहले इस दिशा में जा रहा था, अब ये रिंग इससे कांटेक्ट में आ गई तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिकॉज अब यहाँ से पॉजिटिव करंट जो है ऐसे आ रहा है. सो बेसिकली दैट्स ऑल थैंक्स टू द स्प्लिट रिंग. ठीक है, एंड दैट इज द अदर नेम फॉर दैट. इट इज नोन एज कम्यूटेटर बिकॉज इट्स जॉब इज रिवर्सल ऑफ द करंट इन द कॉइल. ठीक है, आपके कॉइल में करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. एंड द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज द ब्रश व्हिच मेंटेन्स कांटेक्ट विद द split rings throughout. And of course we have a DC power supply, we have magnetic field. ठीक है, now if a question is asked, basically question इसका आप क्या expect करोगे, पहले तो आपको बताना है कि what is they ask in parts. Suppose they say define electric motor or what is electric motor. So what is electric motor, can you tell me? Electric motor gives energy. But it is a device which converts electrical energy into mechanical energy. The first question they will ask. Then second, they would jump directly to the diagram and ask you to explain the working. The second thing they will ask you, what is the principle behind which this is working, इसका base है. So clearly हमने इसके लिए क्या refer use किया था, throughout we were referring to this part. ठीक है, and what does that say, that if you are taking a current carrying conductor and you keep that current carrying conductor inside a field, and how do you place it, perpendicular to the field, right? So if a current carrying conductor is placed inside a field and in perpendicular direction, the conductor will experience a force. ठीक है, and using that principle, and of course this conductor will experience a force which can be given by Fleming's left hand rule. Please remember left hand rule and right hand rule, because do not get confused between them, because आगे हम right hand rule भी पढ़ने वाले हैं, तो कौन सा किसके लिए है वो आपको याद रखना पड़ेगा. So first thing was what is electric motor. I hope I never ever you should go wrong with that. The second one is the principle. So principle is, I'm just writing in brief. What is that? The current carrying conductor. ठीक है, कहाँ पे रखा हमने, space between two sides. placed in magnetic field. But don't say it between two magnets. We are just talking in terms of field. So in placed in magnetic field, ठीक है, what will happen to it? It will experience experiences. Oh yes, please specify. Placed in magnetic field perpendicular to it. ठीक है, so what will happen? Experiences force. ठीक है, आप फिर ये main principle, it experiences a force and the force is given by Fleming's left hand rule. आप Fleming's left hand rule भी state कर लीजिए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा. ऐसा नहीं होता कि principle आपको एक ही sentence में खत्म करना है. 2-3 lines या 4 लाइन लीजिए, 10 लाइन के, it's fine as far as you specify all important things. ठीक है, आप इसको एक ही लाइन में लिखना चाहो तो आप फिर ये भी लिख सकते हैं कि experiences a force and that force का direction क्या है? It experiences a force which is perpendicular to the direction of the field as well as direction of current, right? आपका जो field का direction, sorry, force का direction था, that is actually perpendicular to the magnetic field and it is perpendicular to the current as well. So एक line में काफी complex हो जाएगा, तो break करके लिखिए. So first thing तो ये principle हो गया. Third thing आती है working. ठीक है, so आपको यहाँ पे 0.5 marks होगा, 0.5 marks होगा, या आपको 0.5 and 1 mark for the principle, and then comes 1.5 marks for the diagram. It can be any kind of related field there. Comes the most important part, the working. So what is working more important? You have to show magnetic field, you have to show the coil, you have to show commutator ring, because you have understood how important it is. Brush and then the power supply. ठीक है, once this is done, your diagram के बाद explanation part में इतना आपको दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज आपने क्या बोलना है, CD. अच्छा, इसको ए भी पहले लिख देते हैं. A B C D comes in explanation part.
So आपको जैसे हमने पिछली बार बोला AB experiences force inside the book by Fleming's left hand rule. आपको कुछ वहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाकर लेफ्ट हैंड बताकर ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपली बोला using Fleming's left hand rule AB experiences force in the direction inside the book and CD experiences force outside the book. ठीक है? As it rotates क्या हो जाएगा? Due to split rings, now CD comes in contact with the other brush, other carbon brush, and क्या हो जाएगा? जैसे ये रिंग जो है अभी इसको अगर मैं B1 बोलूं और इसको ब्रश 2 बोलूं, so अभी CD किसके कांटेक्ट में है? ब्रश 2. As it rotates, sorry ये ऐसे, so ये B2 किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? ब्रश 1. I'm sorry. ये CD किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? ब्रश 1 के कांटेक्ट में आ जाएगा. जैसे ये CD रोटेट होकर ब्रश 1 के कांटेक्ट में आ गया, सो यहाँ पे ये जो CD में जो डायरेक्शन करंट ऐसे जा रहा था, अब ये क्या हो जाएगा? इसके कांटेक्ट में आ गया, तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा. आप जैसे ही ऑपोजिट हो गया, ठीक है, तो अभी ये CD will experience force inside the book and AB जो अभी यहाँ आ चुका होगा, it will experience force outside. ठीक है, आपको ये दो लाइन में लिखना है, बट आपको एक्सप्लेनेशन को मार्क्स नहीं होगा. मोस्टली they never do break up in such a way that you know if this is 0.5, this is fairly principle would be for 1 mark, diagram would be for 1 mark. If 1 mark, then you have to make sure that you don't go or miss anything in the diagram. ठीक है? And in fact, they will ask you, instead of explaining or telling you to explain the working, they will give you some simple questions. If they are not asking what is electric motor, they can ask you what is the use of commutator. So what is the use of commutator? Commutator क्यों use करते हैं? Commutator वाले split ring क्यों use कर रहे हैं? It allows the current to switch direction. So यहाँ पे why do we use commutator? Because it helps in the reversal of current. ठीक है? In the coil. ठीक है? That's it. So basically हमें specifically जो question पूछा जाए वो वैसे आंसर देना है. And अगर उन्होंने आपके लिए सारा एक simple 3 marks का या 2 marks का question दे दिया, simply बोल जाए explain working of electric motor, and do you think you will jump to this diagram directly? No. Still you will write the first thing, what is electric motor, then you will write the principle, then draw the diagram, then write the explanation. Be it any case, you should know, you need to give whole information. Are you understanding? Okay. Quickly draw the diagram and draw neat diagram. How much time do we have? Till 16. We can discuss the next. Perpendicular, there's a sign for perpendicular, that this is perpendicular sign. This is perpendicular sign if you are aware of. I did not have space, so I just placed a magnetic field perpendicular to it. And then वो आपको current carrying conductor placed in magnetic field perpendicular to it experiences force, if you want to write force, and its
direction is given by Fleming's left hand rule. But if you want to put, you can put it in short. It experiences force in the direction perpendicular to both tail as well as front. I think we need to do 3 sessions. Ma'am, should I show the questions? Yes. You have the paper. I'll see you one question. First question. Alright. You are going to make your aims. The medium in which light will travel the fastest. So that is 1.3. Ma'am, so A, उसमें B, color S, भी है। मैम उन्होंने A color भी है। अरे वन फिर पॉइंट तो क्या है ये ए ऑप्शन ए ये है ना इसमें B दिया है, इसमें एक ही मॉडल आंसर आंसर कट में कर बी दिया। दिया गलती हो गई है। नीचे भी गिर देना पड़ेगा। नीचे I'll check with you. पूरी क्लास में नीचे अब ये तो पास करेंगे। एक उसमें 20 तो जाएगा टॉप ये भी तो कटे होंगे मैं तो पूरा करेंगे नहीं करेंगे। सब ठीक कटे फिर आगे तेरा लेट आएगा फिर से अबे तेरा पहले ही नीचे हो जाएगा। Apart from that question, how was your performance? I got 28%. It's 50 marks, 30 हाँ, marks. Bio. Yeah. What is the test number? Before I forget, I'll tell them now. Half time or S03 and S05 It can be either 3 or 5, right? Physics Ma'am, three. physics वाला three होगा। Physics and Bio है। और सवाल ठीक है, भी देना पड़ेगा Class has 32. And that's first question. करेंगे right? उसका 29 हो जाएगा। हाँ? उसका भी करेंगे। इसका 28 हाईएस्ट है उसका उसका क्या था All right, is it done? सबके लिए वही है Is it done? यस मैम Shall we move to next part now? हमारी computer all right, done? यस मैम Issue done? Done? हमने कुछ नहीं बात लिखा था मैं Diagram, right? After next. फाइव मिनट्स No, how much is it? Your diagram. हाँ done Just starting. हाँ बस right So I think she will take the time. We can discuss some questions. Okay, then we'll go ahead with this next part. Okay. I'll leave this if she wants this. We'll just do introduction for the next part, which is EMI, electromagnetic induction. Electromagnetic induction. So in previous classes we saw that current
की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. करंट इज इफ एनी कंडक्टर से पास हो रही है करंट, तो we see that field is being created around it and concentric circles from it. Alright. The same thing in reverse way. Faraday was the one to check that if this current can produce field, maybe field can generate electricity as well. ठीक है. So how did he bring that? He took the solenoid coils. Of course, solenoid is something else, but then he took coils, and instead of course, if I connect this with battery, then definitely what will pass through it? Current will pass through it. But now I am checking कि अगर electricity की वजह से field होती है, तो field की वजह से electricity भी होना चाहिए, ठीक है? So he is going to cross check. So what he does, instead of placing battery, if battery is placed, then current will be generated. But he wants to check whether something else creates field in this. So he will place a device known as galvanometer. What is galvanometer? Do you know what is ammeter? Yes, yes. What does ammeter do? Measure It measures the current, right? कितना current pass हो रहा है, इसका magnitude बताएगा, 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है. गैल्वेनोमीटर जो है वो सिर्फ ये बताएगा कि करंट पास हो रहा है कि नहीं, ठीक है. काफी सेंसिटिव होता है, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इट कैन डिटेक्ट. सो इट इज आल्सो अ डिवाइस, but instead of measuring current, it does not measure current, it will only detect current. Are you understanding the difference between that? Yes. So in case current इस direction में जा रहा है, तो मान लीजिए इंडिकेटर इस डायरेक्शन में जाएगा. अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, what did I do the same direction? Yes, ma'am. So if it is going in opposite direction, then it will show the other direction. ठीक है. Ammeter doesn't show you direction of current. Does ammeter show you direction of current? No, it tells you the magnitude of current. What does galvanometer tells? Galvanometer tells कि current pass हो रहा है कि नहीं. Apart from that, it tells you in which direction current is flowing. ठीक है, ठीक है. So now, if this coil is placed and nowhere दूर दूर तक कुछ फील नहीं है, कुछ नहीं है, clearly galvanometer में क्या दिखाई देगा? जीरो करंट, बिकॉज करंट तो पास हो नहीं रहा है. मैंने बैटरी तो लगाई नहीं है, मैंने तो डिटेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया. सो गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर है वो जीरो पे है, ठीक है. गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर है वो जीरो पे है. Now what happens is, soon if you bring a magnet and you move this magnet either towards it or move away from it. So जैसे जैसे आप करीब जाओगे, so you move this magnet in this direction. What will happen as you're moving in this direction? So आपको पता है कि this is extra information, but you will understand. So you know that this magnet is carrying some magnetic field lines along with it, right? So as you are moving it closer and closer, यहाँ पे जो field lines अंदर से pass होने लग जा रही है, उसमें भी change हो रहा है, because now it is going inside and more field lines is going inside. So there is basically influx of magnetic field lines inside it, because of which should have not drawn. So because of which current is generated in this coil. When is it generated? When either your magnet is moving towards it or moving away from it or upside downside, whichever direction. Basically जब भी यहाँ पे जो फील्ड जा रही थी, इस मैग्नेट में जो फील्ड थी उसमें कोई चेंज अगर है, फील्ड में कोई चेंज है, if it experiences change in magnetic field, then there is current generated in it. So since it is moving, so this galvanometer will detect some current because of this magnet which is moving towards it. Field जो यहाँ पे है, जो field line जो cross हो रही है, and because of that current will be generated. Let's say it is generated in this direction and that will be shown. आप हाथ लगाकर तो चेक करने नहीं वाले, ठीक है, ऐसे तो होगा नहीं, और बहुत माइन्यूट होगा तो आप शायद डिटेक्ट भी नहीं कर पाओगे, आपको भी करंट नहीं लगता है. सो बहुत अगर माइन्यूट होगा तो हम कैसे देखेंगे? इंडिकेटर में देखेंगे देयर इज अ डिफ्लेक्शन व्हिच विल शो करंट इज पासिंग. बट नाउ मान लीजिए आप आगे गए, अभी रुक गए,
अब आगे जाकर आप रुक गए हो, यहाँ पे आकर रुक गए हो. Now is this magnet moving? No. Is field changing? No. Will current be produced? No. No. So यहाँ पे deflection क्या हो जाएगा? Zero. ऑलरेडी जो करंट फ्लो कर रहा है वो कहाँ गया? ऑलरेडी जो करंट फ्लो हो रहा है तो वो कहाँ गया? सो हिज क्वेश्चन इज ऑलरेडी फ्लो करंट हो रहा था, कहाँ चला गया? अब मुझे बताइए, जब बैटरी जो था एकदम सारा पावर यूज होने के पहले थोड़ा करंट चला गया, फिर बैटरी पूरा यूज हो गया तो बंद हो जाता ना करंट. ठीक है, तब आप पूछते हो इसके पहले का वो कहाँ चला गया? ऐसा तो नहीं, यूज हो गया. उसमें तो बस हो रहा है, इसमें कहाँ यूज हो रहा है? हाँ, इसमें कहाँ यूज हो रहा है? अ वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ कहाँ यूज हो रहा है? यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में पूरा यूज हो रहा है. करंट पास होता है, उसी की वजह से गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर है वो डिफ्लेक्ट कर पा रहा है. ठीक है, नाउ विल स्टडी अबाउट दिस इन नेक्स्ट क्लास एंड आई गेट द थिंग करेक्टेड, सो डोंट चलो रीचेक करके देना पड़ेगा. परसेंट बढ़ेगा ना 0.5 से होगा. चलो यार.